sure you all are doing perfect. So children, welcome to today's class. Today's topic is the Earth, Sun and Moon. Stepping up, Earth, Sun and the solar system, the movement of the Earth, Moon, stars and constellations, asteroid and comets, artificial satellites. So in this chapter we are going to learn about Earth, Sun and the solar system, movement of Earth, Moon, stars and constellation, asteroid, comets and artificial satellites. The Earth, our planet Earth is one of the 8 planets in our solar system. The solar system is made up of the sun and everything that goes around it. So our planet Earth is a part of solar system. Including Earth, there are other planets which revolve around or rotate around the sun. अर्थ जो है ये 8 प्लैनेट्स में से 8 मानी जाती है और ये सोलर सिस्टम का ही हिस्सा मानी जाती है और अर्थ और बाकी के जो प्लैनेट हैं ये सन के आसपास क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं. In addition to the planets and their moons, the solar system includes dwarf planets, asteroids, comets and all the other bits of rock, dust and ice. So apart from these planets, there are so many moons, or you can say so many asteroids, stones, dwarf planets, comets and bits of rock, dust and ice which are present in the solar system. हमारे प्लैनेट्स और सन के साथ साथ मून भी हैं वहाँ पे बहुत सारे, और यहाँ पे आपको डस्ट भी देखने को मिलेगी जो एस्टेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, और आपको डस्ट पार्टिकल्स एंड आइस भी देखने को मिलेगी. First, we are going to talk about the sun. The sun is the center of the solar system. It is a hot and huge ball of burning gases. It is the nearest star to the earth and has its own light. The earth and the other planets move around the sun. The sun is the ultimate source of light and heat on the earth. There would be no life on earth without this star of the solar system. So sun is a huge star and it is a huge ball of heat and light, and we call it a source of light too. Without sun we can't imagine our life on the earth. सन जो है ये सेंटर माना जाता है सोलर सिस्टम का. ये काफ़ी बड़ी बॉल मानी जाती है, एक ह्यूज बॉल मानी जाती है किसका, हीट और लाइट का, और ये सोर्स माना जाता है लाइट का, जिसके बिना धरती पर जीवन जो है वो एक तरह से असंभव माना जाता है. नाउ सेकंड, प्लैनेट्स. Planets are the celestial bodies that move around the sun in fixed path. The 8 planets of the solar system are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Mercury is the closest planet to the sun. It is also the smallest planet of the solar system. Jupiter is the biggest planet. Neptune is the farthest planet from the sun. Unlike stars, planets do not have their own light. So there are 8 planets in the solar system. The Mercury is the closest and smallest planet, and the Jupiter is the biggest planet of this solar system. प्लैनेट्स के बारे में जान लेते हैं. प्लैनेट्स जो है सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं और ये सन के आसपास क्या लगाती हैं, चक्कर लगाती हैं. मरकुरी सबसे छोटा प्लैनेट है, जबकि जुपिटर जो है वो काफ़ी बड़ा प्लैनेट माना जाता है. Do you know we should never look at the sun without special glasses to protect our eyes. We should not see to the sun with our naked eyes. हमें सन की तरफ अपने naked eyes से नहीं देखना चाहिए, हमारी आंखें खराब हो सकती हैं. तो जब भी आप ऊपर की तरफ देखें, वैसे तो आप अवॉइड ही करें, लेकिन अगर आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ, सन की तरफ, तो आप स्पेशल ही कोई ग्लास वगैरह पहन के रखें. मूवमेंट ऑफ द अर्थ. अर्थ इज़ द ओनली नोन प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट. It is round like a ball. 3/4 of its surface is covered with water, so it appears blue from space and hence is also known as the blue planet. Earth moves in 2 ways. It rotates and revolves. So we talk about Earth. Earth moves around the sun and we see life in Earth because all the life surviving events, or you can say elements, are present here. We have water, we have sand, we have air here. So life exists in the Earth, and 3/4 of the Earth is covered with water. So we call it blue planet too. Earth moves in
two ways. It rotates and it revolves. अर्थ जो है ये क्या करती है, ये रोटेट भी करती है, मतलब ये सन के आसपास चक्कर भी लगाती है और अपने एक्सिस जो उसकी ऑर्बिट है ये उस पर भी क्या करती है, रिवॉल्व करती है. और अर्थ को लाइफ सपोर्ट प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि इस पे लाइफ सपोर्टिंग जितने भी इवेंट हैं या एलिमेंट हैं वो मिलते हैं. फर्स्ट रोटेशन. The earth spins on its fixed imaginary axis from west to east. This movement is called rotation of the earth. The earth axis is slightly tilted. It completes one rotation in 24 hours. Days and night occur due to the rotation of the earth. So earth rotates on its axis and when it completes its rotation, it completes in 24 hours. So it completes one day in one rotation. अर्थ जो है वो अपने एक्सेस पे भी रोटेट करती है, ठीक है, ये अपने उसमें अपना जो इसका एक्सेस है उस पर भी घूमती है और जब ये पूरा घूमती है तो वो पूरा एक दिन 24 घंटे बनाती है. Now revolution. The earth also revolves around the sun in a fixed path called orbit. This movement of the earth is known as revolution. The earth takes 365 days and 6 hours to complete one revolution. Seasons happen due to the revolution of the earth around the sun. So what is revolution? When the earth revolves around the sun in a fixed orbit and it completes its one revolve or revolution in 365 days and 6 hours. So this is called revolution. अर्थ जो है ये अपना जो रिवोल्यूशन है ये क्या करती है, ये सन के आसपास करती है और ये जब अपना पूरा एक चक्कर काटती है तो ये 365 डेज का जो टाइम है उसे कवर करती है, यानी कि ये जो एक चक्कर है ये पूरा एक साल बनाता है. Now third, moon. A body that revolves around a planet is called a satellite. A satellite may be natural or artificial. Moon is a natural satellite of the earth and is our nearest neighbor in space. It takes 27 days, 7 hours and 43 minutes to complete one revolution around the earth. It does not have its own light. It reflects the light of the sun and appears to shine. So our planet Earth's natural satellite is moon. Just like earth revolves around the sun, the moon revolves around our earth and it takes 27 days, 7 hours and 43 minutes to complete its revolution. मून जो है जैसे हमारी धरती सन के आसपास चक्कर लगाती है वैसी मून जो है ये हमारी धरती के आसपास चक्कर लगाता है और एक चक्कर ये कंप्लीट करता है कितने दिन में, 27 डेज और कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में ये कवर करता है. मून की खुद की लाइट नहीं होती, ये अपनी लाइट जो है रिफ्लेक्ट करता है किससे, सन से. फेजेस ऑफ द मून. Every night we see different shapes of the moon. These are called the phases of the moon. It happens because we can see only those parts of the moon that are lit by the sun. Sometimes we do not see the lit up face of the moon at all. This is called the new moon. After 2 or 3 days of the new moon, we see the crescent moon. Then after about 2 weeks, we see the full moon. So children, at night, have you observed the shape of the moon? It changes regularly. It doesn't remain the same throughout the month or all day. So these changes of the shape is called the phase of moon. Why it change its shape? Because it revolves around the earth and earth revolve around the sun. So when the sun's light fall on the moon, the part on the moon's light fall, this part we can see from earth. मून जो है वो अपने phases जो है वो चेंज करता रहता है, मतलब उसकी जो शेप है वो चेंज होती रहती है. हमें मून जो है जैसे सन हमें राउंड ही नज़र आता है, लेकिन मून की हम अगर हम शेप नोटिस करें डेली तो वो क्या होती है, वो चेंज होती रहती है. कभी ये फुल मून होता है, कभी ये हाफ मून होता है, कभी ये क्रीसेंट मून होता है. तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये अर्थ के आसपास चक्कर लगाता है, अर्थ जो है वो सन के आसपास चक्कर लगाती है. तो जब जब सन की लाइट जो होती है इस मून पे पड़ती है तो जिस पार्ट पे ये पड़ती है हमें सिर्फ वो ही पार्ट नज़र आता है. नाउ फोर्थ, स्टार्स. इन द नाइट स्काई वी सी थाउजेंड्स ऑफ स्टार. These stars are many times bigger than the earth.
but they appear very small because they are far away from the earth. The sun is the nearest star to the earth. Group of stars are called constellations. Some of the constellations are Ursa Major, Scorpius and Orion. So with moon we see many stars in the night sky. They are big in size, but why they are seen very small? Because they are very far from our earth, and there are so many group of stars which are called constellations. नाइट में मून के साथ साथ हमें बहुत सारे स्टार्स भी नज़र आते हैं, लेकिन ये स्टार्स हमें बहुत छोटे नज़र आते हैं क्योंकि ये हमसे बहुत दूर है. सन नियरेस्ट स्टार है हमारे अर्थ का, इसीलिए हमें काफ़ी बड़ा नज़र आता है. ठीक है, तो वो जो बाकी के स्टार्स हैं उनका भी साइज़ ऑलमोस्ट सन के बराबर है, बस वो हमें छोटे इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर होते हैं. तो आपको पता ही है जो हमारी दूर की चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा दूर की चीज़ होती है, वो हमें क्या नज़र आती है? काफ़ी छोटी नज़र आती है. और कुछ जो स्टार्स के ग्रुप होते हैं वो क्या बनाते हैं? कॉन्स्टेलेशन बनाते हैं, जिसमें फेमस है ऊर्जा मेजर, स्कॉर्पियस एंड ओरियन. नाउ फिफ्थ, एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स. Asteroids are big pieces of rock in space. They move around the sun just like planets do, but are much smaller than planets. Most of them are found in an asteroid belt in orbit around the sun between Mars and Jupiter. Comets are big chunks of ice and dust that go around the sun. When comets come close to the sun, they develop long, bright trails. Sometimes they are visible from the earth. So we will know about what are asteroids and what are comets. Asteroids are big pieces of rock. They travel in the space. They remain in the space. They remain between the planets and they remain everywhere. Comets are big chunks of ice and dust and they goes around the sun. तो एस्टेरॉइड जो होते हैं ये बिग पीस ऑफ रॉक माने जाते हैं. ये प्लैनेट के आसपास या स्पेस में ही ये वहीं पे फ्लोट कर रहे होते हैं. कॉमेट जो होते हैं ये भी बिग चंक्स होते हैं आइस का, मतलब आइस का या डस्ट का ही ये एक तरह का टुकड़ा माने जाते हैं. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. Human made objects that move around the earth are called artificial satellites. They help in communication, weather forecasting, navigation of ships and aircrafts and perform many other functions. And now we will talk about artificial satellites. What are artificial satellites? They are not natural like moon. They are artificial. They are man-made satellites and they are sent to space to collect the information, to collect the weather forecasting, to navigate the ships and aircrafts. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो होती हैं ये मैन मेड सैटेलाइट्स मानी जाती हैं. ठीक है, ये नेचुरल नहीं होती, ये ह्यूमन से बना करके स्पेस में भेजी होती है ताकि इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट किया जा सके, वेदर फोरकास्टिंग की जा सके, शिप्स वगैरह को नेविगेट किया जा सके और दूसरे फंक्शंस वगैरह किए जा सके. टेक ब्रेक, डिसीजन मेकिंग बेस्ड. राइट एस फॉर सीरियस एंड जे फॉर जोकिंग. The earth is the largest planet of the solar system. It is joking, it is not the largest planet. So you will write J here. Moon is the earth's nearest neighbor in the space. It is serious, so you will write S here. The sun is a huge ball of burning gases. It is true, so you will write S for serious here. The moon has its own light. No, moon has not its own light. Rather, it reflects the light from the sun. The earth takes 365 days to complete one rotation on its axis. It is joking. It takes 24 hours to rotate on its axis. अर्थ जो है ये अपने एक्सिस में एक दिन का समय, 24 घंटे का समय लगाती है. Now chapter cover up. The solar system is made up of the sun and everything that goes around it. Our planet Earth is one of the 8 planets in our solar system. The sun is the center of the solar system. Planets are the celestial bodies that move around the sun in a fixed path. Day and nights are caused due to the rotation of the earth. The changing seasons are caused due to the revolution of the earth. So children, in this chapter we have learned about the solar system, the sun, earth and other planets, also about the artificial satellite and natural satellites. इस चैप्टर में हमने सोलर सिस्टम के बारे में जाना, सन, अर्थ और अदर प्लैनेट्स के बारे में जाना, सन की नेचुरल
जो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है मून, उसके बारे में जाना और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में भी जाना. Now think and answer based on NEP 2020. Take the correct answer. Our solar system has dash planets. Option A 6, option B 8, option C 10 and D 11. So there are how many? 8 planets. You guessed it right. So you will write 8 here. हमारे solar system में 8 planets हैं total. Second, the largest planet of the solar system is option A Jupiter, B Saturn, C Earth, D Mars. So the largest planet is Jupiter. So you will write Jupiter here. The nearest heavenly body to the Earth is dash. Option A Sun, B Moon, C Neptune, D Jupiter. So the nearest body to the Earth is Moon. It is our Earth's natural satellite. मून जो है हमारे अर्थ के नियर है और ये अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट मानी जाती है. फोर्थ, हाउ मच टाइम डज द अर्थ टेक्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन? A 365 days, B 366 days, C 365 days 6 hours, D 409 days. So the correct answer is option C 365 days and 6 hours. It takes to revolve around the sun. Fifth, moon is dash. Option A satellite, B planet, C star, D comet. So moon is a satellite. It is a natural satellite of our planet Earth. moon जो है वो एक satellite है और वो एक natural satellite माना जाता है हमारे Earth का. Now B, fill in the blanks. The dash is the center of the solar system. What is the center of the solar system? It is sun. So you will write sun here. sun जो है ये solar system का center माना जाता है. इसी के चारों तरफ सारे जो planet है वो क्या करते हैं? Revolve करते हैं. The only natural satellite of our planet is, it is moon. So you will write moon here. moon हमने पहले भी पढ़ा है, हमारी earth का ये natural satellite है. The only planet that has life on it is the, any guesses? Yes, it is Earth. Earth has life surviving elements. Fourth, a big chunk of ice and dust that goes around the sun is known as comet. So you will write comet here. Fifth, a dash is a group of stars. It is called constellations. So you will write constellation here. Now see, match the following columns. Column A, column B, a star of the solar system. It is sun. Largest planet, it is Jupiter. Day and night. It is called rotation of the earth on its axis. Nearest neighbor of the earth, it is moon. Constellation, you have to tell constellation's name. It is Scorpius. Now D, answer the following. What is the solar system? Name all the bodies of the solar system. So our planet Earth is one of the 8 planets in our solar system. The solar system is made up of sun and everything that goes around in. In addition to the planets and their moons, the solar system include dwarf planets, asteroid, comets and all the other bits of rock, dust and ice. सोलर सिस्टम क्या है बच्चों? सोलर सिस्टम में आपका सन इंक्लूडिंग पूरे के पूरे जो प्लैनेट्स हैं, अदर जो आपकी सेलेस्टियल बॉडीज है वो आ जाती हैं. सेकेंड, व्हाट आर द 2 मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ? यू हैव टू टेल 2 मूवमेंट्स. It is rotation and revolution. It rotates on its axis and it revolves around the sun. 2 मूवमेंट कौन कौन से अर्थ के? एक तो ये रोटेट करती है अपने एक्सिस पे ही और दूसरा ये रिवॉल्व करती है सन के चारों ओर, मतलब सन का पूरा एक चक्कर लगाती है 365 डेज एंड 6 आवर्स में. और अपने एक्सिस पे रोटेट करती है तो ये कितने टाइम में रोटेट करती है? 24 आवर्स में ये अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है. Third, how is an asteroid different from a planet?
You have to tell the difference between the both asteroid and the planet. So asteroids are big pieces of rock in space. They move around the sun just like planets do, but are much smaller than the planets. Fourth, what are comets? So comets are big chunks of ice and dust that goes around the sun. Fifth, which is the only natural satellite of the earth? Describe it. So we have read about it. It is moon. You have to describe it. Moon is the natural satellite of the earth and is our nearest neighbor in the space. It takes 27 days, 7 hours and 43 minutes to complete one revolution around the earth. It does not have its own light. That's why it reflects its light from the sun. सैटेलाइट कौन सी अर्थ की? मून है. इसको डिस्क्राइब करना है तो ये अर्थ के आसपास चक्कर लगाता है. उसका एक चक्कर जो है ये 27 डेज कुछ मिनट में कंप्लीट होता है. इसकी खुद की लाइट नहीं होती, इसलिए अपनी लाइट जो है रिफ्लेक्ट करता है किससे? सन से. नाउ आउट ऑफ द बॉक्स क्रिटिकल थिंकिंग. Anything on the moon is weightless and it floats there. Why? You have to tell the reason why anything on the moon floats and it is weightless, because moon does not have its own gravitational force. मून में आपने देखा होगा ज़्यादातर चीज़ें फ्लोट करती है और उनका अपना खुद का वजन नहीं होता. क्यों? क्योंकि मून का धरती की तरह अपना खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है. क्रॉस लिंक्स. Physical media development, study the structure of the earth on a globe, identify the water area and land area of the earth. So you have to study the structure of a earth on a globe. Okay, because the globe is the model of the earth. So you have to study globe and you have to study the water area and the land area of the earth. You will discuss it with your friends. So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise by yourself.